Hey, good morning class. How are you? I hope you all are fit and fine in your home and doing your job in proper manner. So myself Anil Adhikari, PGT Mathematics from DPS Lamachor. Today I am going to discuss the next part, which is derivative of chapter number 13. So in this session we will discuss the whole content, which is derivative. So there are some topics which we have to cover throughout this video. The very first topic, what is derivative? So we will discuss what is derivative. Okay. Next, its notation. How will we express the derivative? Third, algebra of derivative. In this topic we will discuss how to add any two functions and then differentiate it, and similarly the difference of any two function is if it has been given, then how to differentiate it. Also we will discuss the product rule, the quotient rule. Last, formula for some trigonometric polynomial functions. कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक और पॉलिनोमियल फंक्शंस के जो डेरिवेटिव फाइंड करने होते हैं उसका फार्मूला क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So the very first, what is derivative? So basically derivative is nothing but the rate of change. We can say the rate of change of one variable with respect to another variable is called derivative of one variable with respect to another one. It is denoted by dy by dx. Okay. Now see, in physics you have learned it. dy by dx means the rate of change of y with respect to x. डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. न्यूमरेटर में जो होगा उसका डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं. मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. इसको हम क्या पढ़ेंगे? dy by dx को dy by dx रीड्स एज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. सो समवेयर कहीं पे कुछ ऐसा भी लिखा होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू द अनदर क्वांटिटी इज नोन एज द डेरिवेटिव ऑफ function. Now we seen that the function is given within two variables, the one is x and another is y. So if we have given any function like that, y is equal to fx, okay, then the derivative of y can be denoted by somewhere you can see y dash, somewhere you can see f dash x, somewhere you can see dy by dx, and somewhere you can see d by dx of f of x. So these are the notations. Okay, these are the notations of derivative of any given function. Okay, so what we have learned here, what is derivative? Derivative is the rate of change of any quantity with respect to another quantity, or you can say the derivative is the rate of change of one variable with respect to another variable. Okay, now we will discuss the mathematical definition. Okay, mathematically derivative को कैसे represent करेंगे? So let fx be any real valued function. Fx be any real valued function. So dear student, what is real valued function? A function is said to be real valued function if its domain as well as its codomain both are real numbers or its subset. Then the function is said to be real valued function. बात समझ में आ रही है? जैसे कोई फंक्शन अगर हमें दिया है सपोज r to r, ठीक है, एंड फंक्शन इज गिवन एज fx इज इक्वल टू x स्क्वायर. So you can clearly see here the domain and codomain both of this function, which is x square, is real. So it is called a real valued function. Okay, nothing else. So we are talking about the mathematical definition of the derivative. So if fx be any real valued function, then at any point x is equal to a in the domain of the function, ठीक है. ये जो पॉइंट a है ये कहाँ लाई करेगा? ये जो पॉइंट ए हमने लिया है ये इस फंक्शन के, जो कि रियल वैल्यूड फंक्शन हमने उठाया है, उसके डोमेन का ही एक पॉइंट है. ओके,
So if f(x) is any real valued function, then at any point x is equal to a in the domain of function, the function is said to be differentiable at point a. डिनोट कैसे करेंगे, f dash a, ठीक है, when it is equal to limit s tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h exist. By saying exist it means that ये जो वैल्यू है इस फंक्शन की, ठीक है, ये जो वैल्यू है इस फंक्शन की एट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 का मतलब when h is tending towards 0, when x is tending or you can say approaching towards 0, then the value of this function should be finite, not infinity या indeterminate. So अगर ऐसी कंडीशन बन रही है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो गिवन रियल वैल्यूड फंक्शन f(x) है ये डिफरेंशिएबल होगा एट पॉइंट x इज इक्वल टू a. ओके, तो जैसे हमने लिमिट में डिस्कस किया था लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, सेम मैनर हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है. फॉर एनी फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव must be equal to right hand derivative and both should be but finite. ठीक है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, if any function is differentiable at any point within the domain, then at that point the functions left hand derivative and right hand derivative both should be equal. ठीक है, अब बात करेंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड करें. तो बेटा ये दिया हुआ है, इसी से लेफ्ट और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, लिमिट, ठीक है, सपोज किसी पॉइंट x इज इक्वल टू a पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट हैंड डेरिवेटिव की. सो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a. ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a. ठीक है, a प्लस मीन्स x is approaching towards a from the right, x tends to a minus means x is approaching towards a from the left. So this at this point a, if the left hand derivative which is this and the right hand derivative which is this, if both the values are equal, are finite, equal के साथ साथ कैसे होने चाहिए, finite, then the function is said to be differentiable at that particular point. And another definition I have told you, if f(x) be any real valued function, then at any point x is equal to a in the domain of the function is said to be differentiable if f dash a is equal to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h is equal to क्या, एग्जिस्ट. ये जो लिमिटिंग वैल्यू है इस फंक्शन की एग्जिस्ट करे, ये फाइनाइट वैल्यू मिले तो ये डिफरेंशिएबल होगा. ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. Now the next topic, today I am going to discuss only the topics. Next video lecture we will discuss the numerical portion of this particular content. So now the next is algebra of derivative. Okay, so in algebra you have discussed about the addition, subtraction, division and multiplication. So similarly algebra of differentiation we will discuss how to differentiate the sum of any two function, the difference of any two function as well as the product and division of any two function. ठीक है, so let's start first. So notation I have already discussed about it. Notation क्या क्या है हमारे, f dash x dy by dx y dash, okay, and d by dx of f of x. So these are the notations. Now the third topic, algebra of derivative. Okay, algebra of derivatives. So basically the very first topic is d by dx. d by dx means differentiation with respect to x, or you can say the rate of change of variable with respect to x. Okay,
So d by dx of, if any two function is given as fx plus gx, so it can be expressed as d by dx of fx. It means differentiation of function fx with respect to x plus differentiation of function gx with respect to x. This is the addition of two function. ठीक है. Now differentiation of the difference of any two function fx minus gx, it can be expressed as differentiation of fx, okay, differentiation of fx minus differentiation of gx. Now the third rule, which is also known as product rule, ठीक है, which is also known as product rule, d by dx of fx into gx. If we have given any two function fx and gx and both the function are are multiplied with each other, then the derivative of such kind of function, how will we find? So what is the formula for it? First, let it be first and let it be second. You can choose any one first and any two second. ठीक है, choice is yours. There is no any issue regarding choosing first and second. So now differentiation of both the function is like that. First function, here I have supposed fx as first and gx as second. So first function into derivative of second plus second function into derivative of first. So this is also known as the product rule of finding differentiation. Okay. Now fourth, it is also known as quotient rule. In this rule, we have to differentiate f of x, fx divided by gx. Means if the function is given as the rational form, then how will we find the derivative? So in this particular case, अगर function आपको कैसे दिए हो, rational function दिए हो fx upon gx के form में, where gx does not equal to 0. This is the mandatory condition. Okay. तो डिनोमिनेटर को हमेशा फर्स्ट और न्यूमरेटर को हमेशा सेकंड फंक्शन हम लेंगे वहाँ पे. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड माइनस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, okay, and divided by whatever the denominator you have given, its whole square. ठीक है. So first function is denominator, differentiation of second, which is numerator, minus second function differentiation of first divided by whatever the function you have given in the denominator, put its square. So this is the formula. Okay. Now formula for some trigonometric and polynomial function. So there are some important formulas. Okay, which we use while solving the derivative of a given function. So the very first formula is rate of change, or you can say differentiation of x to the power n is equal to n x to the power n minus 1, where n is any real number. It can be any real number. Okay, n is as a scalar. So derivative of x to the power n is equal to, पावर आगे आ जाएगी और एक कम हो जाएगी, n x to the power n minus 1. Okay, where n is any real number. Now the second one is derivative of sin x is equal to cos x. Third one, derivative of cos x equal to minus of sin x. Fourth, derivative of tan x is equal to sec square x. Fifth, derivative of cot x is equal to minus cosec square x. ठीक है. And derivative of sec x equal to sec x into tan x. Derivative of cosec x equal to cosec x into cot x with negative sign. Okay, with negative sign. माइनस साइन आता है बेटा इसमें. ठीक है. सो मेक श्योर कि यहाँ पे माइनस का साइन हो. इक्वल टू माइनस ऑफ cosec x into cot x. एट्थ, डेरिवेटिव ऑफ e to the power x is equal to e to the power x. नाइन्थ,
डेरिवेटिव ऑफ a to the power x is equal to a to the power x log a, and last derivative of log x equal to 1 upon x. So these are the some formulas which we will use while solving the questions. Okay, so make sure these formula we have to remember. Okay, ये दिमाग में होने चाहिए so that we can easily find the derivative of any given function. Okay, pause the video and take the screenshot. Okay, now the last topic is chain rule of differentiating any function. ठीक है, chain rule को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. It is a very important rule, and in 12th standard you will use chain rule while solving the derivatives, while finding the differentiation of any given function. So dear student, basically what is the difference between derivative and differentiation? Actually differentiation is the process of finding the derivative of any given function. Okay, this is the basic difference between differentiation and derivative. Differentiation is the process by which we find the derivative of any given function. Okay, now let us do some questions on behalf of this given formulas. So before that I have to explain you what is chain rule. So I am taking one questions to solve this one. Let there be a question cos x square. Okay, and we need to find the derivative of this function which is given as cos x square. So dear student, here you can see this is a function, this is a trigonometric function, and we know that the differentiation of cos x, the derivative of cos x, you can say is minus of sin x. ओके, तो चेन रूल कैसे यहाँ पे लगेगी, ध्यान से देखेंगे. सो व्हेन वी विल गो टू अप्लाई दिस डिफरेंशिएशन साइन, दिस साइन डी बाई डी एक्स into cos x square, then very first we have to face the cos, then we will face the x square. So one by one, चेन का मतलब क्या होता है, the linked up है ना, चीज़ों को आपस में जोड़ने का काम करता है चेन. सो यहाँ पे भी बिल्कुल वही होगा. चेन रूल का मीन्स वी विल डिफरेंशिएट दिस गिवन फंक्शन वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप. सो वेरी फर्स्ट दिस विल फेस कॉस, देन इट विल फेस एक्स स्क्वायर, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज द एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस. सो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स वी नो माइनस ऑफ साइन एक्स, सो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर. ठीक हो गया. दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर. नाउ एक्स स्क्वायर तो अभी बचा हुआ है क्योंकि ये तो केवल कॉस का हुआ ना. तो बाय चेन रूल नाउ वी विल डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर. ओके, सो माइनस साइन एक्स स्क्वायर इनटू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर. सिंस द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन, कैसे मैंने बताया था, पावर आगे आके कम हो जाती है ना, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन. सिमिलरली यहाँ पे पावर आगे आएगी और एक कम हो जाएगी. ठीक है. नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, पावर का भी हो चुका है तो अब एक्स का होगा. सो माइनस टू टाइम एक्स साइन एक्स स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये वन होता है, यू हैव टू लर्न इट. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यों होता है, बिकॉज पावर वन है तो वन एक्स टू दी पावर वन माइनस वन, दैट इज वन एक्स टू दी पावर जीरो. किसी की पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू वन होती है, तो वन इंटू वन इज इक्वल टू वन. सो योर फाइनल आंसर इज माइनस टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर. ठीक है. सो चेन रूल का मतलब ये है, व्हेन वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट एनी गिवन फंक्शन, देन वी विल डिफरेंशिएट द फंक्शन वन बाय वन. ठीक है. स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे. सबसे पहले जैसे कॉस आया, फिर कॉस खत्म, तो उसके बाद एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, फिर एक्स का. ऐसे करके जब हम स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी फंक्शन का, देन दिस काइंड ऑफ रूल इज नोन एज चेन रूल ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ एनी गिवन फंक्शन. ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ठीक है. द एक्सरसाइज ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. अभी के लिए इतना ही. बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे अहेड.